वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम ग्रेड 7 की हिस्ट्री बुक का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इसका फर्स्ट हाफ हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। आज हम सेकेंड हाफ का सेकेंड पार्ट करेंगे, चैप्टर कंप्लीट करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द उमय्यद डायनेस्टीज। The Umayyad dynasty, it was established by Amir Muawiyah in 661. It came to an end in 750. तो अमीर मुआविया ने उमय्यद डायनेस्टी को स्टार्ट किया, इसको इस्टेब्लिश किया इन 661 and it expanded the Muslim territories within a century of its coming to power. और मुसलमानों की टेरिटरीज़, मुसलमानों के इलाके एक्सपैंड करने में, बढ़ाने में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। In 711 to 712, an army led by Tariq bin Ziyad crossed the Strait of Gibraltar and conquered all of Spain. So 711 और 712 के बीच में तारिक बिन ज़ियाद ने स्पेन का इलाका फतह किया। सेम ईयर में in 711 to 712, another army under a 17-year-old Arab general Muhammad bin Qasim conquered Sindh up to Multan. इसी ड्यूरेशन में, इसी टाइम पीरियड में एक 17-year-old अरब जनरल मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध का इलाका भी फतह किया, मुल्तान तक। दो बहुत बड़ी अचीवमेंट उमय्यद डायनेस्टी के टाइम पर, एक तारिक बिन ज़ियाद ने स्पेन को कॉन्कर किया, स्पेन को फतह किया, दूसरी साइड पे मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध का इलाका फतह किया। A significant development during the Umayyad rule was the establishment of the navy. Umayyad dynasty ने navy का system भी establish किया, thus leading to further success. Muslim rule was strengthened and with the conquest of Spain, Cordoba was the capital of Umayyad Empire in Spain. Spain मुसलमानों ने फतह किया, जिसकी वजह से मुसलमानों का एम्पायर और बड़ा और मजबूत हो गया। स्पेन में मुसलमानों का जो कैपिटल था उमय्यद डायनेस्टी का, वो कॉर्डोबा था। दिस पीरियड सॉ ग्रेट ग्रोथ एज नॉलेज, साइंस, आर्ट्स, आर्किटेक्चर एंड स्कॉलरशिप्स वर पैट्रोनाइज्ड। The Umayyad also built canal. Another important contribution by Umayyads कि उन्होंने canal system भी बनाया to supply water. इसके अलावा they made roads to improve travel for traders and pilgrims to Makkah and Medina. एक इन्होंने नेवी की इस्टेब्लिशमेंट की, दूसरा केनाल सिस्टम की इस्टेब्लिशमेंट की, तीसरा रोड्स को इम्प्रूव किया ट्रेवलर्स के लिए। उस टाइम पे अरबिक वॉज मेड दी स्टेट लैंग्वेज एंड अ पोस्टल सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड। पोस्ट का सिस्टम, डाक का सिस्टम भी उमय्यद डायनेस्टी ने ही इंट्रोड्यूस किया था। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ उमय्यद डायनेस्टी। नेवी, canals, roads and postal services. These are introduced and established by Umayyads. Now moving towards the decline of the Umayyads. In the Middle East, the Umayyad dynasty came to an end in 750 when the Abbasids defeated them. So Umayyad dynasty को defeat किया है Abbasid dynasty ने। Abdurrahman, the only one of the Umayyads who survived, re-established the Umayyad dynasty in Spain, where it ruled for another 300 years. अब्दुर्रहमान सिर्फ एक ही उमय्यद बचा था जिसने दोबारा से उमय्यद डायनेस्टी स्पेन में स्टार्ट की और वो 300 ईयर्स तक वहाँ पे एग्जिस्ट की। A remarkable civilization developed which made Cordoba and Granada grand and highly cultured cities. Muslim rule in Spain eventually weakened and came to an end 1492. So Muslims, they kept on ruling in Spain since till 1492. उमय्यद्स का रूल ख़त्म हुआ 750 में और अब्बासिद का रूल स्टार्ट हो गया 750 में, बिकॉज अब्बासिद ने ही उमय्यद्स को डिफीट किया था। The Abbasids, they moved their government to Iraq, where they founded the city of Baghdad, which became their capital. So, अब्बासिद ने थोड़ी बहुत चेंजेस लाई गवर्नमेंट में और इराक में अपनी गवर्नमेंट मूव करी और बगदाद को अपना कैपिटल बनाया। Baghdad was famous as the most cultured and civilized city in the world at that time.
The two most prominent rulers were Harun al-Rashid and his son Mamun. दो सबसे अहम जो इस टाइम पीरियड के रूलर्स थे, जो इस टाइम पीरियड के लीडर्स थे, वो हारून al-Rashid और उनके बेटे मामून al-Rashid थे. Under the Abbasid, from 750 to 1258, the civilization of Islam bloomed and came to be known as the Golden Age of Islam. अब्बासिद के रूल में इस्लाम ने बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश किया, डेवलप किया और इस टाइम पीरियड को हम गोल्डन एज ऑफ इस्लाम भी कहते हैं. Greek and Latin texts were translated into Arabic and medical schools were set up. Now we are starting the contribution. अहम काम जो अब्बासिस ने किए हैं. सबसे पहले उन्होंने जो प्रीवियस काम हुआ था ग्रीक और लैटिन ज़बानों में, उन्हें ट्रांसलेट किया अरबिक में. बहुत सारे मेडिकल स्कूल्स बनाए. मामून al-Rashid ही इस्टेब्लिश्ड बैतुल हिकमा. मामून al-Rashid ने बैतुल हिकमा भी तामीर करवाया. बैतुल हिकमा क्या है? इट्स दी हाउस ऑफ विजडम. बगदाद में हाउस ऑफ विजडम है. मेनी प्लेसेस ऑफ लर्निंग एंड ऑल्सो हॉस्पिटल्स वर सेट अप. सो देयर मेन फोकस वॉज ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन. तालीम पे और सेहत में बहुत ज़्यादा काम हुआ. The Muslim made great contribution and advances in science and mathematics. The Abbasid dynasty came to an end in 1258 with the attack by the Mongols. अब्बासिद डायनेस्टी का एंड हुआ था 1258 में जब मंगोल ने उनके ऊपर हमला किया. अंडर देयर वॉरलॉर्ड हलाकू खान. हलाकू खान जो मंगल्स का लीडर था. ही सैक्ड एंड डिस्ट्रॉयड बगदाद कम्प्लीटली. उसने मुकम्मल तौर पे बगदाद को डिस्ट्रॉय कर दिया, तबाह कर दिया. किलिंग थाउजेंड्स ऑफ इट्स इनहैबिटेंट. हज़ारों की तादाद में लोगों को मारा गया. The great loss apart from human life were the libraries which contained knowledge collected and produced by Muslims over the past 5 centuries. इंसानी जानों के अलावा जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ था वो लाइब्रेरीज़ का हुआ था, क्योंकि लाइब्रेरीज़ में बहुत ज़्यादा मुसलमानों की नॉलेज और इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई हुई पड़ी थी, जो उन्होंने प्रीवियस 5 सेंचुरीज़ में प्रोड्यूस की थी, कलेक्ट की थी. The Golden Age of Muslim Civilization. The expansion of the empire under the Umayyad and Abbasids also gave shape to a Muslim culture and civilization. Muslim scientists, astronomers, mathematicians, doctors, and philosophers contributed immensely to technology and culture. They preserve earlier tradition of ancient Greeks. उमैयद और अब्बासिद के टाइम पीरियड में मुस्लिम एम्पायर बहुत ज़्यादा फैला, बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया, जिसकी वजह से मुस्लिम कल्चर और सिविलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया. मुसलमान साइंसदान, एस्ट्रोनॉमर्स, मैथ का इल्म रखने वाले, डॉक्टर्स एंड फिलोसोफर्स, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और ग्रेट कंट्रीब्यूशन दिया टेक्नोलॉजी में और कल्चर में. इन्होंने एंशिएंट ग्रीक के कामों को प्रिजर्व किया और उनसे हेल्प लेकर नया काम भी प्रोड्यूस किया. Adding their own knowledge, they were able to innovate and progress in every scientific field. So, Muslims ने लर्न किया एंशिएंट ग्रीक से, लेकिन अपनी फाइंडिंग, अपनी नॉलेज भी उसमें ऐड की और बहुत सी नई चीज़ें भी डेवलप की. मुसलमानों ने बहुत प्रोग्रेस किया साइंस की हर फील्ड में. This development of learning is also linked to geography, as Muslim merchants began to travel the known world for trading goods and took their faith to other land. मुसलमानों ने जोग्राफ़ी में भी बहुत ज़्यादा काम किया. मुसलमान ताजिर एक जगह से दूसरी जगह अपना सामान ट्रेड करने के लिए जाते थे और साथ साथ अपना मज़हब भी फैलाते थे. टुक देयर फेथ टू अदर लैंड. इस्लाम को स्प्रेड करने में ताजरों ने भी एक अहम किरदार अदा किया था. देयर इन्फ्लुएंस ओवर लैंड रूट फ्रॉम अरेबिया टू एशिया and Africa to Arabia made them wealthy and they came back with new inventions. जो नए लैंड रूट्स थे अरेबिया से एशिया तक और अफ्रीका से अरेबिया तक, उनकी वजह से मुसलमान ताजरों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ एंड दे बिकेम वेल्दी. और जब वो वापस आते थे तो किसी न किसी न्यू इन्वेंशन, कोई ना कोई नई चीज़ साथ लेकर आते थे. समरकंद
Cordoba and Cairo became centers of learning with universities, libraries, laboratories, and schools. So these are the main important learning center. समरकंद, कॉर्डोबा एंड कायरो में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़, लाइब्रेरीज, लेबॉर्ट्रीज और स्कूल थे. ये मेन लर्निंग सेंटर थे ड्यूरिंग द मुस्लिम रूल. A unique form of Islamic art also developed in the writing of manuscripts, calligraphy, as an art form was used on mosque and building as a decorative medium. सो कैलीग्राफी उस टाइम पे इंट्रोड्यूस करवाई गई मस्जिदों और बिल्डिंग्स पे डेकोरेशन के लिए. सिंस इस्लाम डज नॉट अलाउ द डिपिक्शन ऑफ ह्यूमन फॉर्म, inlay work and geometrical patterns in tile work became typical of Islamic building. इस्लाम में तस्वीरें बनाना, इंसानों की तस्वीरें डिपिक्ट करना मना है, इसलिए ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स वगैरह बिल्डिंग्स पे एज डेकोरेटिव मीडियम ज़्यादा यूज़ होने लगे. Up till now, we have studied about the Umayyads and Abbasids, but there were some other dynasties. So now let's move towards the other dynasties. Some other dynasties that ruled the Muslim territories after the Ayyubids were Fatimids. They were based in Egypt, where they founded their capital, Cairo. Their empire stretched from eastern Arabia and Syria in the east to Egypt and North Africa up to Morocco in the west. सो अब्बासिड्स के बाद फातमिड्स का रूल आया जो बेसिकली इजिप्ट में थे और उनका कैपिटल कायरो में था. सल्जुक्स, they were of Turco-Persian origins and were mainly based in Turkey. Their empire covered Turkey, Uzbekistan, the Persian Gulf and Oman. So after Fatimids, Seljuks came to power. और सल्जुक्स वो बेसिकली टर्की में बेस्ड थे. उनके अंडर जो एरियाज आते थे दे वर टर्की, उज़्बेकिस्तान, पर्शियन गल्फ एंड ओमान के एरियाज थे. सल्जुक्स के बाद अयूबिड्स केम टू पावर. द डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय नूरुद्दीन जंगी एंड वॉज बेस्ड इन सीरिया. Its most famous ruler was Salahuddin Ayyubi, known for his generosity and chivalry. सो सल्जुक्स के बाद अयूबिड्स का रूल आया जिसको फाउंड किया था नूरुद्दीन जंगी ने, एंड ये बेसिकली सीरिया में थी. इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर, सबसे फेमस रूलर सलाहुद्दीन अयूबी था. इन्हीं के नाम के ऊपर इसे अयूबिड डायनेस्टी कहा जाता है. Then Mamluks. Mamluks mean slave in Arabic. The dynasty came into being under rule of Turks and Mongol origin after the death of Salahuddin Ayyubi. The empire it covered Syria, Palestine and Egypt. Now have a quick review of all the important Muslim dynasties. After the rightly guided caliphs, we have the rule of Umayyads. उमैयद्स को डिफीट किया अब्बासिद ने. अब्बासिद के बाद रूल आया फातमिद का, फिर सल्जुक, फिर अयूबिद और फिर ममलुक्स का. Students, now let's start the questions. How did the Roman Empire in Europe come to an end? The Roman Empire in Europe, it came to an end when the Byzantine ruler Constantine, he converted to Christianity. Along with it, when there was weak government, corrupt rulers, and barbarian attacks. These all were the reason that led to the end of the Roman Empire in Europe. Number 2. Which part of the Roman Empire continued for another 1,000 years? Name its main rulers. So, it's the eastern part of the Roman Empire which continued for another 1,000 years, and its main ruler was Heraclius. Question number 3. How and when did the Byzantine Empire come to an end? The Byzantine Empire, it finally came to an end in 1453 by the attack from the Ottoman Sultan Mehmed II. Ottoman Sultan Mehmed II, he defeated the Byzantine Empire. Or how did the Middle Ages affect Europe? The Middle Ages, during the Middle Ages, there was collapse of law and order situation. There was no civilized life and there was no interest in the knowledge. This time period is also known as the Dark Ages. Question number 5. What was the impact of Islam on Arabia?
Name the two main cities where the faith took place. Islam, it had a great impact on Arabia. With the rise of Islam, the people of Arabia, they found a new religion. They gave up worshipping idol and started worshipping one Allah. Along with it, the different tribes of Arabia, they got unified, and Arab, it became one of the biggest empire. The two main cities are Makkah and Medina. Number 6. Briefly explain how the Khulafai Rashidin strengthened and expanded Muslim empire. The Khulafai Rashidin, they played an important role in expanding the Muslim empire. Hazrat Abu Bakr, he defeated the Byzantine Empire, and as a result, Syria came under the Muslim rule. Then Hazrat Umar, he conquered Persia, Egypt, Middle East, North Africa, China, Indian subcontinent, Sicily, North Africa, and Middle East. Hazrat Osman, he also conquered some of the areas like Iran and present-day Afghanistan, but there were some internal issues that led to his assassination. Number 7. Give the extent of the Muslim empire. Name the regions which came under Muslim rule. The Muslim empire, it extended during the rule of the rightly guided caliphs, and the areas which came under the Muslim rule are like Syria, Persia, Egypt, Middle East, North Africa, China, Sicily, Iran, Afghanistan, and Indian subcontinent. Number 8. When and by whom was the Umayyad dynasty founded? How long did their rule last in the Middle East? The Umayyad dynasty, it was established by Amir Muawiyah in 661. In 661, Umayyad dynasty, it was established by Amir Muawiyah. It came to an end in Middle East in 750 when Abbasid defeated them. Question number 9. Who was Abdur Rahman and why is he famous? Abdur Rahman, he was the only one of the Umayyad who survived. He re-established the Umayyad dynasty in Spain, where it ruled for another 300 years. Number 10. When and where was the Abbasid dynasty established? Name its two main rulers. The Abbasid dynasty, it was established in 750 in Iraq. They founded their capital at Baghdad. Their most famous ruler were Harun al-Rashid and his son Mamun al-Rashid. Role did Salahuddin Ayyubi play in the conquest of Jerusalem? Jerusalem, it's an important city for Muslims as well as for Christians. It was conquered by Hazrat Umar, who allowed Christians to visit their holy places. But in the 11th century, when Seljuks came to power, they stopped Christians from visiting their holy places. The Christians, they wanted to recover Jerusalem, so they started fighting for their holy place. The Christians, they succeeded in getting the control of Jerusalem in 1099. It remained under their control. It remained under the control of the Christians till Salahuddin Ayyubi won it back in 1188. So Salahuddin, he was the one who was successful in getting back Jerusalem, and he was successful in keeping the Muslim rule in Jerusalem. ओके स्टूडेंट्स, सो हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया. यहीं पे हम स्टॉप करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी रीडिंग एंड डिस्कसिंग द नेक्स्ट चैप्टर. इस चैप्टर में कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपको नहीं समझ में आई या पूछना चाहते हो तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स. सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप वर्किंग हार्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़.